Today we will talk about, actually I told you that there will be class test. We'll talk about few questions and then we'll come to talk about polity. We'll proceed further. So if you have any doubt, you can ask. 5-10 minutes you should ask any doubt if you have. Aaj 26 now, August 26, 2000. Yeah, Abhay, Pooja, what is diarchy? अभी बताएंगे diarchy, अभी आएगी, अभी आएगा, अभी when we'll solve question we'll tell you. Abhay Rati, diarchy means dual form of government, the two system of government at the same place. What is veto bill? Is MP and MLA are a state in India or outside the India? Portfolio system बता दीजिए जरा सर. बहुत सारे सवाल हैं. We'll answer one by one. Diarchy, veto power होता, veto bill नहीं होता साक्षी. It's a veto power. The governor has veto power and the president has veto power regarding, bill, regarding bill. So it's better when we will talk about governor's veto power, it will be better to answer there. अभी आप लिंक नहीं कर पाएंगे, मैं तो समझा दूंगा. Portfolio system, okay, I'll come. Is MP and MLA are a state in India or outside the India? ये क्या सवाल है? Nitin, can you reformulate the question? I'm unable to comprehend. Is MP and MLA state in India or outside the India? Sir, can you hear me? Are you asking about state? Do they represent the state? Or, yeah, that is your question. As PM is a state in India because he's a part of he's executive. So, is an MLA is a state or not? That is his question, right? Very good. Yeah, I got it now. That can be considered MP as a state. Do you think that MP is a state? You tell me. Does he represent the state? Why? If a police represents the state, why MP doesn't represent the state? He represents the state. MLA represents the state. Councillor represents the state. Revenue officer represents the state. Right? The sanitation worker represents the state. Let me tell you. Right? Maybe state comes to your house and collect garbage. But somewhere it's not a state but private body. Private sanitation staff come and collect the garbage. Right? You have heard about Swachh Bharat Abhiyan. Right? There are two major ambitions of Swachh Bharat Abhiyan. One is solid waste management. Who does its solid waste management? Done by the municipal corporation. Right? Who collects that? Their staffs. Fine. So MP and MLA represent the state. It does. Fine. घूम रहे हैं, वाह, बहुत बढ़िया है. एसी बंद करने तो ज्यादा कूल हो गया. ठीक है, बंद कर दिया. एसी का क्या फायदा? ना हो तो गर्मी, हो तो इतनी ठंडी की. Okay, let's go to question. I'll come to the portfolio. Amber, don't worry. Here things will come. Portfolio system means a government where there are various departments. There are finance portfolio. Portfolio means department. Finance department, defense department, agricultural, rural department. It's all portfolio. Fine. Amber, portfolio system मतलब different kinds of department. हर ministry को अलग-अलग department मिलता है ना? Each ministers get
department. Find some department, that's called portfolio system. Now the question is in front of you. अब इसको बनाइए. Now I'll be mute spectator and observer only. Read the question and make it. Should I read it or it's readable? Readable? Okay. आंसर देना शुरू भी हो गया. A. Okay. A? Yeah, you have to say. I don't know answer. A. Now here is a unanimous call A. Everyone is talking about A. Agree with your fellow? Now it's a Regulating Act 1973. 1773, yeah. 1773. Consider the following statements. It designated Governor of Bengal as the Governor General of India. Fine. It prohibited. कौन था पहला Governor General of India? Warren Hastings. Right? Do you know he was accused of something in Britain? He was accused of something. Why he was sacked? Why Warren Hastings was sacked? No idea. He was sacked due to he was accused of corruption. Anyway, chalo. It prohibited East India Company personnel from doing local trade. Yeah, fine. This is correct. It abolished trade monopoly of the British. No, it's not. So 1 and 2. 1 and 2 is correct answers. Fine. A would be the correct answer. My goodness. चलिए देखिए तो इसको. Is it readable? थोड़ा बड़ा कर दूं. अच्छा, ये लो. थोड़ा और बड़ा कर देता हूं. ये लो. चल, इसको बनाइए तो देखिए तो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में है. It divided the provincial subjects into two parts, namely transferred and reserve. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. It introduced bicameralism and direct election. अब बनाइए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सब. हाँ, yeah, Sakshi, you were right. He was, he was accused of bribe. यहाँ पर आप ए कह रहे हैं, एक और दूसरा. आपके लिए ये भी सही है और आपके लिए ये भी सही है. और आप लोग ए कह रहे हैं यूनानिमसली, बट वहां से बी आ रहा है. आप ए कह रहे हैं और बी आ रहा है उधर से. It introduced bicameralism and direct election in India for the first time. This is correct. This is correct. This is not correct. Now you can 1 and 3. कहां है? B. B would be correct answer. Everyone is stating B. ठीक है. चलो, आपका पॉइंट कम हो गया, उनका पॉइंट बढ़ गया. Right? Now you can see this. Yeah. Purely SSC type questions. The UPSC doesn't ask, but it asks sometime. It asks sometime object this type of question. See? Pakka? Vashak, not confirm?
Not confirm? Abato, you are not confirm? मुझे नाम ऋषि, you are ऋषि, right? और मोहित, मोहित नहीं आया है, right? सुधीर, रोबिन, हर्षित, ठीक है। उस पर सी है, अच्छा इधर से क्या है? इधर से भी सी है, आपकी तरफ से भी सी है, यानी कि ये सी ही सही है लगता है फिर, ठीक है? सी इज करेक्ट आंसर। एनी कंफ्यूजन इफ यू हैव, राइट? नो? देन आई विल गो फॉर एक्सप्लेनेशन। वो सारा फैक्चुअल है, कभी बदलता नहीं है फैक्ट। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. The Act provided for the establishment of All India Federation, introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Residual power were given to the Viceroy. Yeah. C, D. Okay, you decide. Collective तो नहीं होता, of course. You have to attempt by your own self. So who are C? D. All three statements are correct. This side everyone is going for D. सभी लोग D पे जा रहे हैं। तो D? Okay, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा फिर। I'm not going against the majority, because majority is very dangerous, and going against majority is, yeah. Now the question number 5, which one of the following is not a feature of the Charter Act of 1833? जब नॉट आए क्वेश्चन में, चाहे तो आप जरूर नॉट को डाउट कर लो। होता क्या है, व्हाट इफ हम नॉट को छोड़ देते हैं बार बार, ये ह्यूमन एरर होता है, राइट? सो नॉट को क्लियर कर ले कि नॉट है वहां पर, देन यू जस्ट डिसाइड। It deprived the power of the Governor General of Bombay and Madras. It ended the activity of East India Company as a commercial body. It introduced an open competition for civil services. It made the Governor General of Bengal as a Governor General of India. So A is not a feature, huh? इधर से क्या आ रहा है? इधर से C आ रहा है, आपने भी C कहा है, इधर से भी ज्यादातर लोग C कह रहे हैं। ठीक है, C या B, क्या किसको लॉक करूं बताओ? A, okay, and C saying C. Correct answer would be C. Correct answer would be C. Not a correct. Charter Act 1833. You know, Charter Act 1833 provided a Governor General of India. It subordinated Governor General of Bengal and Governor General of Madras under the Governor General of Madras and Governor General of Bombay under the Governor General of Bengal. And William Vantik was the first Governor General of India. ठीक है, समझ गए? ना इसमें केवल बात हुई थी कि it did not introduce, it talked about open competition, mind it. It talked about open competition system for civil services in India, but it did not introduce. It introduced later on. Got the idea? तो फिर भैया इन लोगों का पलड़ा और आगे बढ़ रहा है, right? They are going now. होता कि अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, ये वाजिब है, और यूपीएससी से बाहर आकर के ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। आपने एग्जाम दे लिया और सिलेबस को अच्छे से, पूरे सर्कल सिलेबस को नहीं घुमा, एंड यू हैव अटेम्प्टेड कि मेरा पढ़ा हुआ है, कुछ निकल ही तो जाएगा, तुक्का मार दूंगा, 4 पे तो 3 पे तो एक ही मिस करना है ना,
निकल जाता है, लाखों में एक का होता है, यू आर नॉट सो लकी, राइट। इसीलिए, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं होता है, उसके बाद बहुत निराशा होती है लाइफ में। अगर नहीं पढ़े तो भी मुझे तो लगता है कि जो पढ़ाई लिखा, मतलब जो उसने बहुत मेहनत किया है, दोज हु हैव डन अ लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ लेबर, उसके लिए निराशा तो समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ठीक से पढ़े नहीं होते हैं, दे हैव अटेम्प्टेड द एग्जाम बट दे डिडंट गेट सक्सेस इन पीटी, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, ओ हुआ नहीं। अरे होगा कैसे, ढंग से पढ़ तो लो, एक बार तबीयत से पढ़ो तो सही, तब ना हो तो ठीक है, राइट। तो पढ़ के नहीं आएंगे तो होगा, बनाइए इसको, क्या होगा। In the context of Government of India Act 1958, consider the following statement. Lord Canning was the first Viceroy of India. The Secretary of State for India office came into existence. It initiated the process of decentralization. अच्छा, इसके आप लोगों की तरफ से A ही है, आप लोगों की तरफ से भी A है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था? या वेरी गुड, 1960, अरे भैया 1861 में, right? It started giving representation to different community. Fine, very good. मैंने एक सप्ताह पहले बोला था, मैंने पढ़ने के लिए, right? ऐसे कैसे चलेगा? Which one of the following is not correct? Again, yet not correct about the Indian Council Act of 1909. बनाइए तो इसको। यस, मनोगमा, मनोग्ना, पूजा, ऋषभ, प्रियांशी, नितिन, लाल सुरंगा, साक्षी। या व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डी, नॉट करेक्ट है। यस, इधर से क्या आ रहा है आंसर? इधर से भी डी आ रहा है ज्यादातर लोगों का। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं तो वो सुन के लिख रहे हैं, हाँ पहले लिख रहे हैं, राइट। सो अच्छा, डबल गवर्नमेंट कब एस्टेब्लिश होता है? 1919 में, जिसको डायरकी भी बोलते हैं। कोई लोग पूछ रहे थे डायरकी का क्या मतलब होता है? डबल गवर्नमेंट। देखिए तो इसका क्या आंसर होगा? कोई सवाल हो बीच में तो पूछ लेना, सर ये क्या है, ये क्यों, ये कैसे, कहां पर, सब फैक्चुअल है। With reference to Constitution of India, consider the following statement. Government of India Act extended the communal representation. Pune Pact was the consequence of communal award. What is Pune Pact? देखिए इधर क्वेश्चन सवाल आ रहा है। We'll explain. First you click it. थोड़ा सा सोच लीजिए, राइट, देन आई विल लॉक दिस। अच्छा, सी पक्का, इधर से भी सी, इधर से भी सी, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ इफ यू दी सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 extended the communal representation. You know, communal representation was introduced in 1909. Which community got communal representation? Muslim. 1919 में किसको किसको मिला? सिख, एंग्लो इंडियंस, राइट। वुमन को भी रिप्रेजेंटेशन मिला। नाउ सो इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, पूना पैक्ट वाज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनल अवार्ड। व्हाट वाज कम्युनल अवार्ड? व्हाट इज दैट? Round table conference, you know, round table conference, RTC 1,
RTC 2 and RTC 3. You know, after RTC 2, Roundtable Conference 2, when RTC 2 happened? Very good, 1931. Who was the Prime Minister of UK? Ramsay MacDonald. Ramsay MacDonald, declared separate electorate for SC, depressed class. उसमें SC नहीं कहा जाता था, उसमें SC आ चुका था, SC नहीं कहा जाता था. SC का हिस्ट्री बताऊंगा कब कहा जाता था, क्या है ये बाद में. आर्टिकल 15 बताऊं. डिप्रेस्ड क्लास. डिप्रेस्ड क्लासेस. अच्छा, इसको डिमांड किसने किया था? अंबेडकर ने. Ambedkar demanded separate electorate, as Anglo-Indian was given, as Muslim were given, and Ramsay MacDonald accepted that demand, and that is called communal award. Now Gandhi को सुनते ही मिर्ची लग गई. What Gandhi thought, this is division, and rule, right? And he thought that British is using this method to divide India. He was right. And what he did? He sat fast on to death. He was in jail that time in Pune. अब जब जेल हो गया, तो जेल में ही फास्ट में बैठ गए. And Gandhi had many supporters. Right? The Gandhi supporter pursued Dr. Ambedkar that Dr. Ambedkar leave it. Right? Dr. Ambedkar leave it. There was a talk between Ambedkar and Gandhi. There is a negotiation in that jail. That jail is in Pune, and that is popularly known as Pune Pact. Pune Pact. Right? What Gandhi agreed? Gandhi agreed for reservation. Gandhi agreed for reservation to the repressed classes, and Gandhi said, Dr. Ambedkar, leave the demand. Right? And leave it for nation. Ambedkar replied, Mr. Gandhi, where is my nation? Gandhi, हमारा देश कहाँ है? He established one organization that is Bahiskrit Bharat. He wanted independence from social totalitarianism rather than British. Right? For Ambedkar, the Brahminical colonization was more intense and higher than the European colonialism. Right? Are you getting my point? He said, where is my देश? ये देश तो मतलब आप लोगों ने छाप रखा है. Untouchables कहाँ है? गांव के किसी कोने में पड़ा हुआ है. Not allowed to walk freely, not allowed to eat freely, not allowed to breathe freely, not allowed to speak freely. Are we free? Where is my nation? Right? There is one drama on Gandhi and Ambedkar debate. The play name is Gandhi and Ambedkar, played by Asmita Theatre Group. If you can watch, it may be available on YouTube. You can watch it, or you can go for here. Mandi House में है ना? Mandi House में ये है, उनका होता रहता है, या बहुत जगह पे होता रहता है. If you can watch, it's a very good, healthy debate between Ambedkar and Gandhi. Anyway, so that was the Pune Pact. The Pune Pact between Ambedkar and Gandhi regarding seat distributions. And Gandhi agreed double of what Ambedkar demanded. Double seats, Fine. वो डाटा आप याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए. ठीक है?
Am I clear? Pune packed? Am I clear? Pune packed? Yeah? Okay. Okay, let's move to the next question. अच्छा, ये separate electorate was announced by, yeah, बताइए तो क्या Rishi, what do you think? Minto, so why you are in suspicion? Ramon or Ramse? Who? तुम ना ऐसे पूछ लो मिंटो वन एक मिंटो है उसको तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो राइट तो हु यार मिंटो और मिंटो रिफॉर्म ना 1909 यू नो ऑल यस with reference to the constitution consider the following statements about Government of India Act 1935. The act introduced federalism in India. It empowered Viceroy for the first time to issue an ordinance. It provided joint public service commission. क्या आ रहा है आंसर? बी. इधर से क्या आ रहा है? इधर तो अलग अलग पूरा मिक्सचर है यहाँ पर. ए बी है, बी बी है, डी बी है और सी रह गया, बस सी भी कह दो. सब है सर, सब है, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें. राइट नाउ दिस इज योर टाइम. या इट एक्ट इन फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ये नहीं होगा, ऑलरेडी था इनके पास पावर. एंड इट या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 1 and 3 B would be the answer. Yeah, now they have uniformly agreed that okay, B would be the answer. हाँ, इस बार आपको पॉइंट मिला है, अभी भी उनके पास एक ज्यादा है. हाँ हाँ, नहीं 2 बार उन्होंने, आपने 2 बार नहीं दिया, उन्होंने 2 बार दिया है. हाँ, बाकियों में बराबर दिया है, 2 बार उन्होंने, मतलब अब 1 बार उनका ज्यादा है. Now you do it. Consider following statements about Charter Act 1813. The act abolished trade monopoly of the East India. You can read it, na? अब जी, हाँ डी पक्का यूनानिमसली. ओके डी, इधर भी डी है. चलो आप लोग सही इतना कह रहे हो तो मुझे आई एम नॉट डेयर टू. या लुक एट दिस क्वेश्चन. या make it. Are you able to read it? Yeah. आस्था, आप आस्था ना तो थोड़िया प्राजिकता. ओके, मैं ऐसे नाम याद करना पड़ेगा ना मुझे, 2-4 क्लास में हो जाएगा मुझे याद नाम. क्या आंसर हुआ है? क्या आंसर है आपकी तरफ से? डी. ओपिनियन पोल डी है. ओके, इधर का ओपिनियन पोल क्या है? डी 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 डी. कुछ लोगों ने ए भी कहा है. अच्छा, नाउ लिखिए. The act included Indians in the Legislative Council, fine. It initiated a process of decentralization. This is also fine. And the act recognized portfolio system. It's also fine.
Yeah, D would be the answer. D would be the correct answer. Fine. Now just solve it. फोर्टीन क्वेश्चन है 25 लाख का केबीसी 14th 50 15th करोड़पति Yeah, answer Priyanshi, Swakshi, Amber, Nitin, Lalsaranga, Pooja. The Government of India Act 1990 clearly defined separation of power between judiciary and legislature, jurisdiction of the central and provincial governments, power of the Secretary of State for India and the Viceroy, none of the above. क्या? B. Or are you representative of all? Yeah, no. No, everyone represent themselves, right? B. D. Okay. फिर कोई बी भी कह दो तो कोई ना कुछ तो होगा ही इसमें बी एंड डी यहां पर भी अलग अलग आ रहा है बी 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 एक ने कहा बी होगा या डी होगा और सबने बी कहा है बी वुड बी द आंसर राइट पावर को बांट दिया गया था या डायर की वेरी गुड समझ में आया कैसे होगा या ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट डायर किया एंड ऑल्सो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये तो बहुत सा आसान सवाल है ये बोलिए तो क्या है या मेक दिस क्वेश्चन नंबर 14 या हाउ कैन यू या ऋषि नहीं पढ़ा आप लोगों ने डी ऋषि ओके डी वुड बी द करेक्ट आंसर ये इधर से भी डी आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं भाई बट कुछ भी हो सकता था यू आर राइट नाउ यू लुक एट दिस क्वेश्चन इन द Federation established by the Government of India Act 1935, residuary power were given to the किसको दिया गया गवर्नर जनरल उधर से भी आ रहा है गवर्नर जनरल वाइसराय यस 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 या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर जनरल बोल के ही पूछा गया था यूपीएससी में इट्स यूपीएससी क्वेश्चन राइट अब देखो तो ये सवाल कैसा है Now you can make it one more question on 1813 Charter Act. Yes, Sakshi, Pooja, Manogna, Nathan, Harsh, Lalsuranga, answer it. Amber, किसी को मत सुनो अपना सुनो दूसरा गड़बड़ कंफ्यूज कर देगा देखो इधर से तो ए आ रहा है ज्यादा इधर से ए आ रहा है भाई नाउ यू पीपल डिसाइड सी ओके सो देयर इज अ डिफरेंस एक लोगों ने सी कहा है अदरवाइज सब लोगों ने इधर ए कहा है नाउ लेट मी कंक्लूड it extended the trade monopoly it ended the trade monopoly of the East India Company except tea and China ठीक है ये it asserted the sovereignty of risk ground over the Indian territory held by the company it's also right the revenue of India were now controlled no revenue still was in British hand 1 and 2 would be the correct answer
ए, फिर से ज्यादा ले गए वो. It asserted sovereignty of British Crown over the Indian territory. The first time Indian territory was called the British territory in the act. That's why. हाँ हाँ, ब्रिटिश पोजीशन लिखा गया एक्ट में. इंडियन टेरिटरी वाज ब्रिटिश पोजीशन. One minute. Asserted sovereignty of British Crown. No, British Crown has some assertion, yeah, over the India's sovereignty, yeah, over the Indian territory held by. Yeah, you're right. It was Pitt's India Act 1784, where the British positions, yeah, so on territory. But this time also, ये तो गड़बड़ है. अगर ये भी गड़बड़ कर दोगे तो आंसर कहां से निकल आएगा? Just need to look it. If you are, need to look it. और किससे? लक्ष्मीकांत से. Right? Fine. But for time being, answer would be A. Fine. This time again, the online has more weightage. Now you can solve this question. मैंने क्या होगा? आपके तरफ से बी, इधर से बी आ रहा है. Which one of the following statement is not correct? Not correct about the Constitutional Assembly of India. It was formulated by the Cabinet Mission Plan. It is correct. Its members were directly elected. No, na. Sachidanand Sinha, first president, presidential state nominated the representative of the Constitution. Sachidanand Sinha. He was the oldest member of the House. Even what is pro tem speaker? Pro tem speaker is elected the senior most general. Similarly, वैसे ही था. So B would be the correct. Yeah, it was partly elected and partly nominated. Amber. हाँ, C बोल रहा है wrong. सचिदानंद सिन्हा ये तो सही है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो. सेकेंड तो राजेंद्र प्रसाद थे ना, राजेंद्र प्रसाद वाज सेकेंड. शुभम, सी इज राइट आंसर, मतलब राइट स्टेटमेंट. फाइन शुभम. ओके, नाउ हम लोग करोड़पति से भी आगे भाग गए. नाउ मेक इट. In the context of the Constituent Assembly, consider the following statements. Each province was to be allocated seats in proportion to their population. Seats allocated to the British province were principally divided into three communities: Sikh, Muslim, General. Seats were elected from the provincial legislature on the basis of proportional representation. हाँ, डी होगा, इधर से भी डी आ रहा है. All statements are correct. ये सवाल देखिए तो. The seats to the British India provinces and princely states in the Constituent Assembly were allotted on the basis of their contribution to the Indian economy by the agreement between provincial legislature assembly and princely states on the basis of geographical importance and their contribution to in the freedom struggle in proportion to their respective population. क्या था? D, इधर से भी D आ रहा है. Yeah, it was based on population. चलो, ये कितने करोड़ का?
करोड़पति हिसाब से तो बहुत आगे भाग गए हम लोग. Yes. There was no role of Muslim League in the formation of the Constitution of India, as the Muslim League was delegitimized as the political party in India. There was no assurance that minorities would have once the British left. The Muslim League refused to participate in the election process. It had boycotted the meeting of the Constituent Assembly, citing their demand for partition. D? Okay. That's पे D ही आ रहा है. Yes, all are D. चलो. थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर लिख करके दीजिएगा. Do you think that the Government of India Act 1919 was an act for introducing responsible government in India? Discuss. Write these two questions and write it answers. क्वेश्चन लिखिए, मैं आ रहा हूं. Yeah, have you noted down? Please repeat. Second question. Why is it said that the Government of India Act 1935 extended the responsible government in India? Give reason in favor of your argument. Why is it said that Government of India Act 1935 extended the responsible government in India? Give reason in favor of your argument. Yeah, Pooja. Have you noted down? Yeah, हट जाओ. लो. क्वेश्चन लिखने के बाद इसको बत्ती बना के रख लीजिएगा कहीं पे. इसको बनाना है, इसका आंसर लिखना है. अभी लिखना है, अभी नहीं लिखना है. अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं. I won't restrict you, but I will allow you to write at home. Don't worry about that. But write it. As of now, मैंने टाइम दिया था, आपको बोला था, राइट? आपको बताया था कि पढ़ के आना. आपने नहीं पढ़ा, दैट्स नॉट माय फॉल्ट ना. मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं. पहले कुछ आंसर, थोड़ा कुछ राइटिंग बता देता हूं, आंसर कैसे लिखना है. राइट, डन. राइटिंग पार्ट डन हो गया. नाउ तीन चीज बता देता हूं आंसर में कैसे है. पीपल हैव रिटन आंसर, बट उनका आंसर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. राइट, देयर आर प्रॉब्लम इन राइटिंग आंसर. फर्स्ट, आपको जो पूछा जाए उतना ही लिखना है. राइट, एड्रेस द क्वेश्चन. होता क्या है, वी ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट आवर नॉलेज. जितना भी उसको पता है मुझे, उसके बारे में हम लिख डालते हैं. And what happens at the end, we ended with an answer which is not the correct answer of the question, which is the question does not address your answer does not address the question. तो पहली बात, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, पहला से, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज एन एक्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया? राइट. सो आपको बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में लिखना है और इसके फीचर्स के बारे में लिखना है. अगर आप, इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम बैक, bring it from very brief. For example, you can start with that government of the Council Act 1961 gave first time representation to Indians, right? And that followed in successive act, right? 1980 जो भी उसके बारे में, 1909, right? Which finally in 1919, produced a responsible government in India. बस आपको इंट्रोडक्शन में लाना है जो भी लाना है. नाउ सेकेंड थिंग्स, आपको क्वेश्चन एड्रेस करना ना ज्यादा ना कम लिखना है. सेकेंड थिंग, यू नीड टू राइट
and you need to give example. For example, you need to give proof or example. Right? For example, there are many features of Government of India Act 1919. For example, it extended representation to Sikh, to Anglo-Indians, to women, right? To और किसका था? अभी तो हमने बात किया था ना? Anglo-Indians, yeah, Europeans, right? So आपको example देना है. Fine. तीसरी बात है आपको लिखने से राइटिंग में कोहेरेंसी चाहिए. यू नो व्हाट इज कोहेरेंसी? कोहेरेंसी मींस जो पहला लाइन है वो आधार होना चाहिए दूसरे का. द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी बेसिस फॉर द सेकंड पैराग्राफ एंड दैट शुड बी बेसिस फॉर द थर्ड पैराग्राफ. ऐसे एक सीक्वेंस में होना चाहिए आपका आंसर. व्हाट द आइडिया? There should be coherency in writing. ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी लिख रहे हैं आप. Fine. So there should be coherency. Third, जो भी लिख रहे हो, write in very clear write-up. Don't mix. थोड़ा सा आपको पता है shape size जो पेपर का है. The shape and size of the paper, UPSC answer writing paper, answer paper. Write it very clean. And write clearly. Your language should be very clear and comprehensible and readable. Let me tell you. Right? It matters how you represent your answer. Fine. And then one more thing I would like to tell you that if you can in GS, make a pictorial representation. Right? Pictorial representation. So स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन शुड बी 3 to 4 लाइन्स. क्या इंट्रोडक्शन होगा? टेल एलिमेंट्री अबाउट एनीथिंग. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. टेल एलिमेंट्री थिंग्स इन द फर्स्ट 3-4 लाइन्स. फाइन. कोई भी क्वेश्चन है, एलिमेंट्री जो बेसिक आइडिया है, date, time, some primary data that write about that. घबराना नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कहां से शुरू करें कहां से नहीं. Write about something primary about the things that has been asked. Fine. Secondly, your body. Your body are यहीं पर अगर आप पिक्टोरियल यहां पे बना ले या बॉडी के बीच में कहीं पे बना दे, तो बॉडी में आप पॉइंटर वाइज में लिखना शुरू कीजिए. साक्षी, आई हैव सीन मेनी आंसर्स, दे आर राइटिंग इन पैराग्राफ. यू कैन राइट पैराग्राफ बट इट इज बेटर टू राइट इन पॉइंटर फॉर्म. राइट? अगर 10 मार्क्स का है तो 7 पॉइंट्स यू मस्ट राइट. 6-7 पॉइंट्स होना चाहिए. देन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. राइट? और बोलोगे सर पहला पॉइंट जो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर है, लगता है कि यही एग्जैक्ट है, राइट इट. देन सेकंड प्रायोरिटी किसका है? उसका. से थर्ड, ऐसे लिखते जाइए 6-7 पॉइंट. फाइन. एंड नाउ आवर ऑनेस्ट इज टू मेक इट पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन. कि मान लो किसी को ये नहीं पढ़ा गया, टाइम नहीं है, किसके पास? एग्जामिनर या जो एक्सपर्ट है. If they don't have time or they don't want to read, now you can make a picture and through picture you can demonstrate your answer. अब बोलोगे सर पिक्चर कैसे बनाना है? It's very easy. Right? For example, you can write Government of India Act 1935 and you can write simple features of the Government of India Act. That would be suitable to your answer. कुछ भी नहीं, जो भी फीचर्स है आपको लिख देना है. फाइन. ये आप बॉडी के ऊपर भी बना सकते हैं. प्रॉपर्ली बॉडी के ऊपर इंट्रोडक्शन के बाद ही बना दीजिए. एंड देन बॉडी में राइट 6 or 7 पॉइंट इन फेवर ऑफ योर आंसर, जो पूछा गया है. राइट? एंड व्हाटएवर जस्ट एड्रेस द क्वेश्चन.
डोंट डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको कम पता है, जितना है पता है उतना ही लिखे, लॉजिकली और थोड़ा लिखे, यू पुट योर ओन लॉजिक, राइट, बट डोंट ब्रिंग समथिंग एंड समथिंग, आंसर कुछ और भी नहीं लिख देना है। गॉट द आइडिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल, अगर पूछेगा कि मान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा, तो हाउ डू यू थिंक दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर was responsible to divide the world in Cold War? आपने बहुत पढ़ा है कोल्ड वॉर के बारे में, आपने बहुत पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, but it is asking from your perspective, how do you think that this incident, second world war, divided the entire country, entire world into two parts, right? You use all data, but you be analytical rather than flooding it from the lots of information you have. Fine. Now after body you can write conclusion. Conclusion कितना होना चाहिए? 3 to 4 lines mostly. अगर 150 में कहा गया, now you start writing in this word, start practice. एक पेज है इस साइड और इस साइड, उससे ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मैं क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने ये को दोनों क्वेश्चन दिया है, आई टोल्ड यू 200 वर्ड्स, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड 200। व्हाट द आइडिया? ऐसा नहीं कि 6 पेज लिख दिया आपने, आंसर दे दिया, सर खुश हो जाएंगे। नो, आई विल नॉट बी हैप्पी, राइट? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ एंड आफ्टर 3 months you will get, yeah, सॉरी, नहीं होता कंटेंट कवर। क्यों नहीं होता? 100 वर्ड में हो सकता है, 50 वर्ड्स में हो सकता है, 1 पैराग्राफ में हो सकता है। यू शुड हैव कैपेसिटी टू प्रिसाइज इट। दैट यू हैव टू लर्न हियर ना, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न हाउ टू बाइंड इट in a very precise manner. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। जब आप नोट्स बनाए तो बनाए, you make notes in 200 words, 300 words, 400 words, not more than that. ऐसा नहीं कि हम 2000 वर्ड का 6 पेज का एक एसे लिख रहे हैं, नहीं। पॉलिटी में ऐसे पूरा जीएस पेपर जो है आपका, your essay will come from your optional, mind it. Your optional will support your essay paper, not the GS paper. Fine. तो try to practice, जितना address the question, जितना ही content जितना लिखना है उतना ही लिखना है, और जितने टाइम में लिखना उतने टाइम में लिखना है, don't mind. अभी आप now you start writing answer, you take time, no, instead of 10 minutes you take 30 minutes, no, but start concising it, start precising it, the time, and you must be able to manage between content and time. For example, there are 20 questions, right, and you have written 10 good answer with a good content, but you have lost the time, you don't have time. What will you do? Will you get good marks? You won't get it, right? But you have time, but you don't have content, right? So you have syllabus with yourself, develop content on each topic, few paragraphs, 200, 100, 150, not more than that, right? 300 maximum. Precise it. Fine. And then you have to manage this. So address the question, give the example. If your example giving, if question is from fundamental right or any other, officials, for example, on governor, on abhi review petition chal raha hai, PMLA. What is PMLA? Prevention of Money Laundering Act. Now the Supreme Court is doing review, hearing open house review petition. You must know what is review petition,
when Supreme Court can hear review petition, what are the articles which empower the Supreme Court to empower, to review petition, on what things Supreme Court cannot hear review petition, right? How many review petition has been introduced, done in the last 2-3 years? Fine. What are the judgment? You must have some basic idea about a topic, right? So आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है. कौन सा आर्टिकल है, जजमेंट क्या है, राइट? कोई कमिटी है, इफ यू नो एनी कमिटी रिकमेंडेशन, यू कैन पुट इट, राइट? इफ यू कैन कंपेयर विथ यूएस, यूके polity, you can compare. Unlike UK, you have this. Indian polity has this. That's called analytical answer, right? Coherency होना चाहिए. मैंने बताया कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एड्रेस करता है आपके आंसर को, ऐसे ही नीचे चले जाते हैं. 6 पॉइंट 7 पॉइंट 7 पॉइंट लिखना बहुत है, 8 पॉइंट बहुत ही ज्यादा है. टाइम ही नहीं होगा आपके पास. अगर 15 पॉइंट लिखोगे, आप कंटेंट तो दोगे, टाइम आपका मिस कर जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? मेकिंग सेंस? थोड़ा सा बैलेंस करना है. एंड देन आप ये जो लिख रहे हो ना, वो थोड़ा सा अभी से शुरू करो. ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ कहीं पे घुसा के ना. दैट शुड बी रेगुलर, अरेंज्ड मैनर, इन अरेंज्ड मैनर. होता नहीं, कई लोग ऐसे टेढ़े लिखते हैं. बहुत लोग लिखते हैं, लिखने का बहुत, या बहुत सटा के लिखते हैं, या बहुत हटा के लिखते हैं. नहीं, राइट? इट शुड बी क्लियरली कॉम्प्रिहेंडेबल. नहीं तो क्या करेगा पता है? वो पढ़ने की कोशिश करेगा, उसका सर कर जाएगा दर्द. वो पढ़ना चाहेगा, आप पढ़ नहीं पाएगा. फिर क्या करेगा? वो चाहेगा पढ़ना, वो कुछ ऐसा करेगा, घूम के आएगा थोड़ा, और सोचेगा फिर पढ़ लूं. अगर उसके बाद अगर उससे थोड़ा दिक्कत हुई, वो बिठाकर 0 बिठा के चला जाएगा. आपने कुछ भी लिखा हो, राइट? या 2-3 मार्क्स बिठा के चला जाएगा. क्या फर्क पड़ता है? Are you getting my point? So write comprehensive, मतलब write clearly. It should be arranged, right? Your picture should be clear. Demonstration ये होना चाहिए, right? और ज्यादा पेज नहीं मिलता है, 150 पेज, यही उतना ही मिलता है 150 के लिए. उतने में सारा आपको खत्म करना है. और स्पेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, कि यहां से लेके यहां तक आप खत्म कर लो. फाइन. या बीच में यहां तक. ऐसा नहीं कि एक ही पेज में आपने सारा गथ दिया वहीं पे. होता है ना, करते बिल्कुल यहीं पे रख देते बस. हाँ जी, हो गया, मेरा काम खत्म. फाइन. राइटिंग इज एन आर्ट. आई एम टेलिंग यू, लर्न दिस आर्ट, राइट? लर्न दिस आर्ट. एनीवे, चलो कुछ और करोगे क्या? मैं तो और सवाल लाया हूं आपके लिए प्रियम्बल से. मैंने सोचा पढ़ाऊंगा नहीं आज यही काम करेंगे. विल टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर. एक दिन तो सप्ताह में होना चाहिए कि दैट वी शुड टॉक अबाउट. कैन वी अप्लाई RTI टू सी आवर आंसर शीट? देखो सवाल क्या क्वेश्चन आया है कि कैन वी अप्लाई RTI टू सी आवर आंसर शीट. RTI इंफॉर्मेशन के अंदर है कि नहीं? आंसर, यू कैन अप्लाई RTI टू नो योर नंबर, but I don't know whether you can apply RTI and UPSC can show you your paper. But there is a possibility. Nitin, yes. AC बंद करवाने वाले जरा उसको चलवा के भी आओ. चालू करने गए थे, नहीं तो पता चला यहीं गिर गए. नहीं, ठीक है, बंद कर दिया. Now
Can you make this? Acha. In Indian larger polity, the word democratic means popular sovereignty, ruled by the people. Yeah. आपके तरफ से क्या है? ए, उनके तरफ से भी ए ही आ रहा है, फटाफट ए है आंसर। जरा इसको देखिए तो, make it. Which one of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. B? ठीक है। Now look at this question. India is a secular state, which means the state does not have official religion, cannot intervene in the religion matter, can intervene to reduce discrimination. Sakshi, Amber, Nitin, मनोगना, और लोग क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? नितिन, पूजा, या वेरी गुड पूजा, प्रियांशी, वेरी गुड। हाँ, does not have official religion, cannot intervene. No, it can intervene. So 1 and 3. Yeah, which one of the following is not a characteristics of a secular state in India? तो चारों ऑप्शंस भी सही से पढ़ लो, उसके बाद जवाब दे देना। चारों ऑप्शंस के हिसाब से भी ऑप्शन सुटेबल वहां पे रहता है, सेलेक्ट द सुटेबल आंसर, सुटेबल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज नॉलेज इज सब्जेक्टिव, राइट? नॉलेज इज नॉट कौन बनेगा करोड़पति। So it may seems, you know, for all 4 options maybe appear as a correct. इधर से भी ए आया है, इधर से ए आया है, अब डी आ रहा है। Now people are A, again D. यार कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन है क्या हमारे यहाँ? नहीं है ना, तो ये यही होगा ना, नॉट दिस इज नहीं है ना हमारे पास। और छोड़ो ना, है कि नहीं? एलिमिनेशन प्रोसेस जानते हो ना आप लोग, राइट? टू जस्ट एलिमिनेट द रॉन्ग। अब देखिए तो, ये क्वेश्चन बनाइए तब मैं मान जाऊंगा, सेक्युलरिज्म पे ही है। पढ़िए इसको और बनाइए, मैं मान जाऊंगा कि आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ा है। यहाँ पे ए और बी में संघर्ष चल रहा है ऑनलाइन के बच्चों में, और मामला आधा आधा का है। Many people are, you know, responding A would be the answer, but at the same time many are going with the B. Now what do you think? For you A, and then for you? Now I'm separating into 2 parts. Yeah, B. Oh, यहां पर भी A और B हो रहा है। अच्छा, A वालों का क्या क्या एक्सप्लेनेशन है? Now, presence of a state in religious matters, but absence of religion in a state institution. Right? So, do you think that a state intervenes in religious matter? There are state which they are present in religious matter, but there is an absence of religion in the state institution. Huh? For example, वो religion base पे है। कह तो सही रहे हो, लेकिन
Yeah, Hindu Marriage Act. But see, religion in state institution, किस state institution में आपको religion मिलता है, मुझे बताइए ना. अच्छा, तो फिर जो तिरंगा है यहां पर अशोक चक्र धर्म से नहीं है क्या? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम. Is it not religious connotation? Does it have? Isn't it? This is national song, not national anthem, national song, and is directly coming from one religion, isn't it? This chakra is coming from religion. It means, it means there is a religion is a state. There is a presence of religion in a state institutions. Nahi. So B would be the correct answer. Reservation वाला रिजर्वेशन वाला से आंसर सही था, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा नहीं आ रहा था. Hindu Marriage Act, state can intervene, but there is no presence of religion in government. दमनप्रीत पता चल गया कैसे है? Damanpreet, you are saying there was no presence of religion in the state. There is. Fine. Okay. If it is fine, then make this question. चलो, मतलब आधा पढ़ाया मैंने, या जो भी पढ़ाता हूं आधा समझ में आता है. आधे लोगों ने सही दिया, आधे लोगों ने सही नहीं दिया. इधर भी आधे आधे का हिसाब किताब था. चलो 50% ही सही. क्या होगा? डी. डी आपके तरफ से क्या है आंसर? नंबर डी सब लोग डी बोल रहे हैं. तो मैंने वेस्ट मिनिस्टर, कैबिनेट फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर, वी टॉक्ड अबाउट इट. Yeah, you can you just look at this question. There is a parliamentary system of government in India because the Rishi. Do you know what is the meaning of Rishi? What is that? Seer. Yeah, seer, right? Ancient seer. Yeah. So what would be the answer? A wise person. In Athens, they were called sophists, right? A person who possesses Sophia, knowledge, wisdom. What would be the answer? D. इधर से क्या है भाई? डी. प्रियांशी ने बी कहा है, अदरवाइज सारे लोग डी कह रहे हैं. अच्छा. There is a parliamentary system of government in. Yeah, look at now. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. मैंने बताया था ना, Article 75, Clause 3. The basic principle of parliamentary system of government. Council of Minister और executive, इसी को executive भी कहते हैं. Executive is responsible to the lower house. Lower house कह दे, लोक सभा कह दे, घबराना नहीं है. Right? Clarity is a power. Once you are clear, सब गलत है, आप सही हो बस. Once you are clear, but once you are in confusion, then तो सब सही है, आपको सब पे जाएगा सब. Right? So your clarity is your power. Fine. So I don't think there is a confusion here. Priyanshi, parliamentary system of government is based on collective responsibility, and collective responsibility means the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha, right? The lower house. Okay. Now make it. Out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government.
you read options D also and then answer. Have you gone through D? Then here I'm again sliding it. Read it and then answer me. क्या निकल कर रहा है? C. इधर C एक लोगों ने B कहा है, साक्षी ने. नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है. नो, दैट्स गुड. इफ यू आर नॉट गेटिंग क्वेश्चन, फर्स्ट यू गेट क्वेश्चन. there is a theme, right? What is question? कभी कभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछते होंगे, मैं आंसर ऐसे देता हूंगा, आपको पता चलता होगा सर ने क्या पूछा, मैंने सर ने बकवास कर दिया पूरा. होता है, आपको लगेगा ऐसा, राइट? हाँ, इसका क्या मतलब है कि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं समझा और फिर मैंने आपको रिप्लाई तो दे दिया, but I didn't get a question. Sometimes what happens, you don't get question, you don't answer properly, right? So first understand the question. What is the question? Out of the following statements, choose one of that brings or the principle underlying the cabinet form of government. What is the cabinet form of government? Parliamentary system? Parliamentary form of government? पता है ना क्या? Parliamentary form of government are called cabinet form of government, vice minister model, prime ministerial form of government. Told you that. And what is the basic principle of parliamentary system of government? Collective responsibility, right? The executive or the government shall be collectively responsible to the lower house. इतना पता होना चाहिए. 2015 से लेके 2021 तक हर साल एक एक क्वेश्चन आया है, मात्र इतने में. What idea? अगर आपको इतना पता है कि parliamentary form of government is also called cabinet form of government, prime ministerial form of government, Westminster model of government, and there is one principle that is collective responsibility. If you know this only fact, you can solve the question. Now read it. See, an arrangement of minimizing the criticism against the government whose responsibility are complex and hard to carry out nahi hoga. Now, a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibility are increasing day by day. सब में responsibility word use किया है, देखिए confuse करने के लिए. देख रहे हो ना विनोद? कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा. यू हैव टू नाउ अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल. नाउ यहां पे टू द पीपल यूज किया है. लोअर हाउस रिप्रेजेंट्स whom? टू द पीपल. दिस शुड बी द आंसर. यस, किसको समझ में नहीं आया था? नितिन, did you get the question and answer? C would be the correct answer. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर समझ में ना आए ना, टीचर को रोक दीजिए, सर मुझे नहीं समझ में आया. Even if you don't get a meaning of word, right? Knowing word is very important, so that you can understand the entire sentence. And understanding sentence is very important in order to understand the paragraph. ठीक है? Now let's move. Now again here you can see 2015 से लेके 2000 कितने तक, 21 तक कितना साल हुआ? 6 साल 6 क्वेश्चन आए लगा, हर साल एक क्वेश्चन आया. 2022 में नहीं आए थे. Now you can see all are from UPSC. All questions are from UPSC. The main advantage of the parliamentary form of government is that, अब बनाइए, फॉर्मूला आपको पता ही है. आपको पता है कि पीटी क्लियर करने के लिए मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा नहीं. मेंस के लिए पूरा सर्कल घूमना है.
right? And you study for men's. It is nothing. It is an easy cake that you can cut, but with a strategy. Fine. Make it. See, very good. उधर से भी सीसी आ रहा है. ठीक है, अब तो बन जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे. चलिए, तो आ गया ये नया सवाल. अगेन फिर से पूछा गया था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पे ही. क्या है ये? हो गया ना? क्या पेन से क्या करूं? हाँ, इसको देखिए तो वहां से दिखाई तो देता है ना आपके पास. पढ़िए इसको. क्लियरली विजिबल. हाँ जी, बी. एग्जैक्टली रिपीटेशन नहीं है, आपको क्लोज में जाना है. राइट? इस आपके तरफ से क्या आ रहा है? बी. चलिए. Government is responsible to the Lok Sabha. Now you see the lower house in the Lok Sabha, and it can be removed by it. Fine. You can see this question number 11. सर चारों आंसर सही है. जी बताएं ना. जी बताएं. टेल मी योर साइड. डी. अच्छा, ए would get more preference, और ए ही ज्यादा आ रहा है. वाह. अब मुझसे पूछ रहे पॉपुलर गवर्नमेंट का क्या मतलब है और लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है. अच्छी बात है. वेरी गुड. नाउ इफ यू लुक एट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, राइट, I told you that in India, in Indian polities, who is the supreme? Indian Constitution. Everyone's powers are limited by the Constitution, whether executive or judiciary. No one is sovereign in India. Who is sovereign? Indian Constitution. That means everything is limited as per the Constitution. Similar. So power is limited by. Now, if you look at the most options would be D. Now, this time you have given correct answer. Popular governments means government, people's government. We the people. मैंने पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में बताया था नितिन, right? When I told you that sovereignty lies in the hand of the we the people. When we the people elect the government, then it become popular government. It become democracy. It become democracy. Right? Are a constitutional government
क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपको पॉलिटी में बताया कि दो चीज पे ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ पावर मैप. ऐसे कैसे घूम रहा है भाई? It is a power map. If I define it as a power map, it gives power, at the same time it limits power. It gives power to individual, to community, to institution, but at the same time it limits power. Can we call constitution as a power map? Right? In terms of power, if I dare to define it. Right? So if you look at the government, it is a limited government and limited by the constitution. A constitutional government का मतलब पूछ रहा है पूजा. The question actually about constitutional government, it means limited government. Wherever there is a constitutional government, it is a limited government. Okay, fine. Explain D. I told you that constitutional government मतलब क्या है? Constitution is a power map, right? Which gives power to each individual, at the same each institution. What is the source of power for the Supreme Court? Indian Constitution. There are various articles which is devoted to court, judiciary. What are the source of the individual power, citizens' power? The Constitution, the entire fundamental rights talk about the power of the people. The preamble talks about we the people. So when we say constitutional government, means a government must be limited. Right? यहां पर आपको दिख रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो मोस्ट सुटेबल होगा लिमिटेड गवर्नमेंट होगा. Can government remove any time before fixed time? Yeah, government can be removed before fixed time. There is no fixed time for the government, right? Period is 5 years. The period for election is 5 years, right? But Constitution does not say the term of a government will be 5 years. No. After 5 years, there will be election. And at each election, government has to secure majority. Any party has to secure majority. Right, Pooja? Okay. Now, let me move to next question. हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, but टाइम कम है. रेस्ट जो बचेगा वो नेक्स्ट. अब ये देखिए तो इक्वालिटी डज नॉट मीन इसको बनाइए. Yes, make it. The equality does not mean. इधर से क्या आ रहा है? डी ही आ रहा है इधर से. चलो आप सही कह रहे हो. Yeah, make it. Question number 13. In the context of Indian polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? देखो इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आपको लिबर्टी डिफाइन करना है. डी, उधर से भी डी आ रहा है. चलो क्यों पंगा लेना, डी सही है. Now look at this question. In the context of the preamble, consider the following statements. It is an integral part of the Constitution. It cannot be amended by the Parliament. The 42nd Amendment has added the word secular. Think about it.
B. Yes, B 1 and 3. हाँ, it cannot be, it can be amended ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना. Now, can you make this? We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? Make it. आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए. उसके बाद हम लोग मंडे को मिलने वाले हैं. अच्छा, वीकेंड पे क्या करने वाले हो तुम लोग? घर जाओगे? ऑप्शनल, ऑप्शनल क्लास है. नहीं तो घूमने निकल जाते आराम से कहीं. हाँ, ऋषिकेश घूम के आ जाते. इकोनॉमिक्स ऑप्शनल? यार आपको वो बताएंगे, मुझे नहीं पता है क्या है. मुझे अपने बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, वो भी थोड़ा थोड़ा. क्या, what will be the correct answer? Tell me. A. Yeah. Prajikta, right? Yes. Both and 1, 2. And here all are putting C. Now, मैंने नहीं पढ़ा है क्या? The British Parliament is supreme. मैंने बोला British Parliament can make a man to a woman, right? But in India, Indian Parliament is limited by the Constitution. अभी बताया, limited government. In India, matter related to the constitutionality of the amendment of the act of the Parliament are referred to the Constitution bench of the Supreme Court. Yes. So 1 and 2 both, C would be the answer. Right? C would be the answer. ठीक है. Nitin, C would be the answer. Now one person has answered A. अब देखिए तो इस सवाल को. क्या? डी, बी. ये पिछले साल का क्वेश्चन है, 2021 में आया था. पहला सवाल यही था, पहला या दूसरा था ऐसे क्वेश्चन. देखो कौन है ये होशियार. इतना डी नहीं होगा तब. It is what exact constitutional status of India on 26th January 1950, right? So क्या होगा? A sovereign democratic republic. ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है डबल एस, ये कब जोड़ा गया है? 1976 ना. या 42nd amendment. Very good, very good, very good. Good, good. Do you want to solve more? बहुत सवाल है. हाँ, डिपेंड्स ऑन यू. बोर हो जाए तो बता देना, मैं छोड़ दूंगा. लाइफ में अगर पढ़ो और मस्ती ना हो तो फिर इसको बनाइए तो. The preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. Not a part of the Constitution and has no legal effect either. A part of the Constitution and has same legal effect as any other part. A part of the Constitution has no legal effect independently of other part.
अच्छा, इधर से क्या रहा है? अरे इधर से तो डी सब डी यूनिफॉर्मली डी कह रहे हैं लोग। एक तो है कि आपका ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? और a part of the D would be the correct answer. You know, preamble is a part of the constitution but has no legal impact independently. But it has legal impact if you read with the provisions. मैंने एक चीज लिखवाया था, you remember? When you read other part of the constitution, article, clause, right? It's very important to understand preamble. Important preambles helps you, right? Another thing, preamble is a part of the constitution but not a provision of the constitution, and that's why preamble has no legal effect independently, but it has legal impact, you know, along with the other provision of the constitution. So it is a part of the constitution and has no legal effect independently of other parts. What the idea? 18th कर लेते, ठीक है, चलो देखिए इसको। Yes, make it in the context of the objective resolution. Consider the following statements. कौन बता रहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? नेहरू नहीं, आप लोग नहीं, किसी दूसरे बैच में था ये। It is the fundamental source of the philosophy of the constitution. It enshrined the aspiration and value behind the constitution. It was unanimously adopted on the Constitutional Assembly on 26 January 1917. A would be the answer. Yes. ये क्या था? 22 जनवरी था, ठीक है।